Good morning everyone. How are you? I hope all will be well. Today we are going to start our revision class. Do you know about student? Your exam is around the corner, so you have to practice at home. So we will revise it. Which chapter is coming from your exam? Okay. Now let's start. First chapter student your is singular and plural. Do you know? Singular and plural. This chapter name number is 8. So beta open your chapter 8 and we will do practice for exam. Now student listen, which type question will come in your exam. So we will practice on your blackboard. Okay. So student, first question is your from the plural of the following word. So look at the board. Your first question is like this. From the plurals of the following word. Following words. Student, listen me carefully. In your chapter, this type of question, okay? Form the plurals of the following words. Suppose I have given here balloon, okay, like this benches and bushes, okay. Listen, I have given some example here like this balloon, like this bench and bush. Do you know what will you use for making plural? Yes, we will make here balloons, okay. And do you know about your like this CH, HS, what will you add? ES, okay. What will you add? ES. So like this BENCHES, benches, okay. Like the same as it is CN and SH में what will you use? क्या use करेंगे अपन? ES use करना है. तो like this bush, तो अब आप write क्या करोगे यहाँ पे? Bushes. Okay, clear? And now that in simple we will use only S. हम S use करते हैं. If we are making plural form. Clear? Now student listen. Suppose I have given here yes, I am given here like this army, okay, baby, city. Do you know what will you as? Listen student, ye listen, y is your consonant. तो now that if we are make plural, हम इसको plural बनाते हैं तो हम y को क्या कर देंगे यहाँ से रिमूव कर देंगे और y की instead of y what will you as? You will as IES like this ARMIES. तो क्या बन गया बेटा? आर्मीज. ओके. नाउ सेम एज इट इज इससे इस कॉन्सोनेंट को हम हटा देंगे और यहाँ पे हम क्या राइट कर देंगे? y की जगह पे IES. ओके, क्लियर? सेम एज इट इज हियर, सिटी की जगह y को हटाया हमने, क्या राइट करेंगे? CITIES, cities. ओके, क्लियर? एंड नेक्स्ट स्टूडेंट listen, be carefully. Same as it is I have given here more like this boy, donkey and key. Listen student, if consonant before, if vowel come, listen, consonant before vowel come, so now we will not write instead of YIES, only we will add S. Okay, what will you add? You will add only S. आपको S ही add करना है. Got it? Here listen, Y consonant से before is not, here is vowel, इधर vowel नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पे Y को हटा करके क्या add किया है? IES. Got it? But here is listen, Y consonant before is here vowel. Do you know vowels? A, E, I, O, U. If
y बिफोर आपके पास यहाँ पे a आता है, e आता है, i आता है, o आता है, u आता है, तो हमें वहाँ पे क्या करना है, y को नहीं हटाना, हमें ओनली उसमें y के आफ्टर हमें s ऐड करके उसका प्लूरल बनाना है। क्लियर, सिंगुलर प्लूरल, ओके। एंड नेक्स्ट बेटा लिसन, सपोज इफ एनी क्वेश्चन this type, okay, like this LEAF leaf, listen, if किसी क्वेश्चन के अंदर बेटा लिसन करो, अगर आपके पास LF आ जाता है या F आ जाता है तो हम लिसन इनकी जगह पर क्या यूज करते हैं, VES, क्या यूज करते हैं, VES, लाइक दिस टाइप, लिसन वेट HAL, हम इस y को हटा देंगे बेटा और इसकी जगह पे हम क्या यूज कर देंगे, VES, हम VES पुट कर देंगे, ओके। किसकी जगह पर बेटा, अगर आपके पास F आ जाता है तो हम उसको हटा करके उसके जगह पे हम क्या राइट करते हैं, VES, ओके। तो क्या बन गया, हाफ का हाफ, ओके। लीफ का क्या बन जाएगा बेटा, LEAVES, लीव्स, गॉट इट, क्लियर। और नाउ बेटा लिसन, हियर इज some example also given here like this, chief तो आपको हो जाएगा chiefs, glyph glyphs, okay, draft drafts, listen, got it। अब आपको लिसन, अगर इन लिसन करो बेटा, here सपोज करो हमारे पास यहाँ पे भी f आ गया, यहाँ पे भी f आ गया, लिसन यहाँ हमने f को हटाया और instead of f we have to put here VES, but listen be carefully बेटा, if consonant, listen, अगर आपके पास f से before वही सेम एज इट इज वॉवेल आते हैं, A, E, I, O, U, अगर आपके पास आते हैं तो हमें यहाँ पे F को नहीं हटाना, क्या नहीं करना बेटा, हमें F को नहीं हटाना और हमें यहाँ पे क्या लगाना है, ओनली S, क्या लगाना है, ओनली S। तो ये चीफ है आपके पास, ओके, तो क्या बन जाएगा, चीफ्स, बिकॉज F से बिफोर यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, वॉवेल आ रहा है, इसलिए हम इसको F को हमें नहीं हटाना और F के साथ में हमें क्या पुट करना है, S, तो ये क्या बन जाएगा, चीप्स। आपको समझ में आया बेटा, लिसन, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे CH है, SH है, ओके, इनके आफ्टर हमें क्या यूज करना है, ES यूज करना है और यहाँ पे हमें Y को हटा के क्या राइट करना है, IES राइट करना है, ओके। और लिसन करो, अगर किसी क्वेश्चन में Y से बिफोर अगर वॉवेल्स आ जाता है तो हमें वॉवेल्स वाले में हमें Y को हटाना नहीं है और उसके केवल आफ्टर हमें S पुट करना है। अगर Y से बिफोर वॉवेल्स नहीं आता तो हमें Y को हटाना है और इसकी जगह में IES पुट करना है, गॉट इट। ये कौन सा था बेटा, IES Y वाला। और लिसन, इसमें देखो सेम एज इट आई टोल्ड टू यू, अगर आपको मैंने अभी बताया अगर F से बिफोर कॉन्सोनेंट आता है तो F को हमें हटाना है और VES पुट करना है। अगर लिसन बेटा F से बिफोर अगर वॉवेल आता है तो हमें उसमें ओनली S ही पुट करना है, ओके। नाउ मैनी एग्जाम्पल इज गिवन इन योर बुक, सो यू हैव टू प्रैक्टिस एट होम फॉर एग्जाम, ओके। नाउ लिसन स्टूडेंट, हियर लाइक दिस मैन, MAN मैन, वो किस में चेंज हो जाएगा, MEN में, वुमेन का वुमेन हो जाएगा, फुट का जस्ट लाइक दिस टाइप, FOOT फुट, FOOT फुट, ये किस में चेंज होता है, FEET फिट में, लिसन, ओके। सो बेटा ये लिसन, दिस चैप्टर इज योर सिंगुलर एंड प्लूरल, ओके। वी विल प्रैक्टिस फॉर नेक्स्ट चैप्टर। So beta next chapter is your or listen student, in your book two types of question like the singular plural. First question, from the plural the following is, second fill in the blank with the plural form of the noun given in the bracket, like this type, fill in the blanks आपको put करने हैं। Fill in the blank. Suppose I have given here girls are playing with the toys. GIR. Girls are playing with the toys. Student, and sorry, I have given here toy. Okay, and here I have given here toy. Okay, you have to put here like this I have given according to sentence also.
Okay, it can come in your exam like this, that type also. So you have to practice. Like girls are playing with the dash toy. Ab I have given here toy. Just now I told to you, if y before vowels come, so what will you add? Only you will add to s. So you have to put here toys, like that type. Okay, clear? Now we will practice for next chapter. Your next chapter is the adjective. Okay, chapter 9, your adjective. Okay beta, adjective. Do you know about your adjective? Yes beta, आपको adjective के बारे में पता है. An adjective is a word that describe the quality of the naming word or noun. Clear? So we will say adjective. So beta listen, different type of adjective in your given in your book. You have read also in your online classes. So beta only we will practice. Listen, you can see that in your book two type of exercise like this type here. Exercise that. So in this exercise you have to choose proper word from these boxes and you have to fill in the blanks. Got it? Like this type I have given here, fill in the blanks according to the chapter. Fill in the blank. Suppose I have given here the boy. Listen, my first question is a girl. The girl is dash. Listen, my first question is the girl is dash and second the boy is dash. The boy is dash. So listen, first of all you have to given many example of upper side in your boxes. So you have to choose like this. The girl is dash. The girl कैसी हो सकती है बेटा? Like this. Girls क्या हो सकती है? Beautiful हो सकता है. The girl is beautiful. You can fill here. और second question is the boy is. So you can say the boy is small हो सकता है. Okay. Boy कैसा है? Small है. Girl कैसी है? Beautiful है. So you have to fill in a particular answer. Okay. You have to choose in your boxes. आपको इन boxes में से answer choose करने हैं. You have to fill here. आपको इसमें fill करना है. Okay. First question that type of adjective. And second question like this type. Look at the following picture and tick write the correct adjective. Suppose I have given here, tick write the correct adjective. Okay, tick write the correct adjective. Suppose I have given here the tiger. My question is just like this. The tiger is a. My question is wild and domestic. Okay, animal. Suppose this type of question is given in your book. Okay, I have taken is here one example also. So first question is listen. My question is the tiger is a dash domestic dash animal. Question what is your question? Tick write the correct adjective. आपको इस पे टिक करना है correct adjective पर. Okay. Suppose मैंने आपको स्क्रिप्ट किया the tiger is a dash animal. Do you know about your कि tiger is a wild animal या tiger is a domestic animal? Yes, your answer is yes. Tiger is a wild animal. So you have to tick on wild पे. Got it? That type you have to do a question. Okay, and you have to do practice in your book also. In your book has many example given. Okay, and next question is our next chapter is chapter 10. I think article. Yes, chapter 10 is your article. Do you know about a and the? Okay, I have taken many worksheet also from this chapter article like this type. I think you have to understood that chapter. So again listen beta like this type. In your books have given exercises. Yes beta. In your book has given exercise like this, fill in the blanks. Okay. Suppose I have given here fill in
the blanks with A or N here, okay, like this type, and the also. Clear? Suppose I have given here okay, A and the. Yes, beta, listen. In your book, there is example. There is a dash bag on the table. Okay, like you have to fill here A, N, and the. Okay, you have to fill here correct answer. So you can write here there is a bag on the table. Okay, so like this you can fill here A. Okay, there is a bag. Clear? Do you know about bag is different type is like this cotton, like this क्या कहते हैं jute also, cloth also, leather also. So it we don't know which type of bag is here. So we will put here A. Okay, like this type. And second also you have to like this. Second is we saw dash ostrich in the jungle. Like this type question, we saw dash ostrich in the jungle. So like this type, do you know which sound is coming from? O, vowel. So what will you put here? You will put an. Okay, you will put an like this type. And you can write here like this. Yes, you can fill here like this. It has given many example like this: stick, orange, pear, arrow, apple. You have to fill according to that A and the. Okay, you have to read also in your online classes that A and the article, and I have taken many worksheet also from this chapter. So beta, you have to do practice at home of this chapter also. Next. Next is beta, listen, your last chapter is verb, chapter 13, okay, sorry, chapter 13 is your verb. Like this type beta, in your chapter action verb, stative verb and possession verb also, okay. So like I have given here, suppose I eat mango, I have given. So do you know which is your verb? Your eat is your verb. So you have to write here eat. Okay, आपको choose करना है इसमें से like this type. Second question like this, I have a bag. So do you know have is your verb? So you have to fill here have. What is like this? I am eating mango. I am eating mango. So like this type you have to choose and you have to fill here action word like this. Am writing. Okay. Am eating. You have to fill. Okay, clear? Next one is beta, listen. Do you know? Just like this time, I am a girl. This is your stative verb like this. Am. Your is answer am. Okay. Am your answer. Am eating. Have. Eat. These are all verb. ये क्या है बेटा? Verbs हैं. Okay. So you have to choose also like this type in your book. Given many example. Pick out the verb in the following sentence and write them in the boxes. She is playing tennis. So you can say is playing. Like this of Anita and Babita are sister. Anita and Babita are sisters. So like this are. Are is your verb. Okay. Manoj has a color TV. Has is your verb. Okay. So you have to fill
all chapters, like the those chapters coming your exam, you have to fill in your book, you have to do practice also beta, listen or listen while doing your work, keep things in your mind, you have to do all work in good handwriting. Do you know बेटा आपको ऑल वर्क किस में करना है, विथ गुड हैंडराइटिंग में आपको अपना वर्क करना है। जो नोटबुक आप यहाँ पे सबमिट करने के लिए आओगे उस नोटबुक में आपकी राइटिंग एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अगर आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन नहीं होगी तो मैम को अंडरस्टूड नहीं होगा, मैम को समझ में नहीं आएगा तो क्या होगा, फिर मैम उसको रॉन्ग ही करेगी। इसलिए बेटा वाइल डूइंग योर वर्क यू हैव टू डू गुड हैंड राइटिंग, ओके। दोज वर्क, आप जितना भी वर्क उसमें करोगे आपको अपना वर्क किस में करना है बेटा, गुड हैंड राइटिंग में। और गैप लीव कर करके, गैप लीव करके, कंजस्टेड वर्क नहीं होना चाहिए बेटा, क्योंकि चेकिंग में प्रॉब्लम आती है ना, इसीलिए आपको उस वर्क को क्या करना है, अच्छा करना है, खुला खुला अच्छा स्पेस दे करके राइट करना है और राइटिंग एकदम गुड करनी है। राइटिंग अच्छी होगी तो मैम अच्छी तरह से चेक करेगी आपकी नोटबुक, ठीक है बेटा। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।